When I'm on the rails, I go choo-choo. I go choo-choo. I go Hi choo-choo. everyone, welcome back to my channel. This is Lomesh Sharma and you're watching Kingston Style. So today we have a very interesting topic which is foreign exchange market or FRX as you know. Alright, so we have in this whole video, I have separated this video chapter wise as you can see. Okay, in the timeline, you can see the timestamps in the description. So if you want to go to a particular topic, you can choose from there. Or I will suggest you to watch this whole full video because I have explained all the basics of foreign exchange market in this video. So without wasting much time, let's dive into this video. So the first question that occurs in our mind, what is Forex market? Okay, what is FRX? So guys, basically foreign exchange market is a very simple market where we trade in two different currencies pairs, alright, of different countries. Suppose we have US dollar and Japanese yen. So it's USD JPY and we are trading in USD JPY. So we are trading in a foreign exchange pair of US dollar and Japanese yen. Alright. So it is very simple. You just have to know the basics of foreign exchange market and it will be very simple. And for that I'll give you an example, a very amazing example. तो आप सपोज कीजिए आप यूएस जा रहे हैं एंड यू हैव रुपीज एंड सिंपली वहां पर आप रुपीज स्पेंड नहीं कर सकते. यू हैव टू एक्सचेंज योर रुपीज फॉर यूएस डॉलर, राइट? सो व्हाट यू विल डू, आप एक्सचेंज शॉप पे जाएंगे, वहां से अपना आप रुपीज देंगे, यूएस डॉलर में एक्सचेंज करेंगे. सपोज करिए वहां पे प्राइस चल रहा है उस टाइम 75 rupees for $1. All right, so what you will do, you will give them the money, you will take the US dollar, you will spend the whole week over there, okay? And when you will come back in India, so you again have to exchange the money, right, in Indian exchange. So what you will do, you will give the US dollar and you will take the rupee, and at that time the price is 76. All right, so when you have exchanged the money from rupees to US dollar, the price was 75, and when you are exchanging from US dollar to rupees, the price was 76. So somewhere you have made some money without doing anything, right? So how it works, किस तरीके से वर्क करता है? अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ने इस चीज को इतना सिंपल बना दिया है, अगर आपको करेंसी पेयर्स में ट्रेड करनी है और इस तरीके से प्रॉफिट जनरेट करना है तो उसके लिए आपको कंट्री टू कंट्री ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा. आपको सिंपली अपना लैपटॉप ओपन करना है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट खोलना है, चार्ट्स देखने हैं, ट्रेड्स लेनी है. इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? सो आई होप यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन राइट नाउ. So second question occurs in our mind, what is currency pairs? So as you can see in front of your screen right now, we are in USD. Just a second. So these are all currency pairs, okay? When you will trade in any platform, you will see all these currency pairs over there, like New Zealand and Canadian dollar, Australian dollar, New Zealand dollar, Euro, AUD, okay, British pound, Swiss franc, AUD, JPY, USD, CHF, and many others. All right, so you have the opportunity to trade in all these currency pairs very easily. Just click on that. So this is the trading view chart. All right, so you cannot trade in this trading view. Okay, you have to get a broker or something like MT4, MetaTrader 4, MetaTrader 5, and then you have to sign up and things like that. So I will not get into that stuff right now. I just wanted you guys to know what is foreign exchange. All right, so as you can see, these were all the currency pairs that you can trade in. Okay, so right here the British pound and US dollar. Let me open this one. So this is a very interesting and very important thing in foreign exchange market, and you should know, guys. So suppose I'm trading in GBP USD, alright, which is British pound and US dollar, and I'm taking a buy trade right here. What does it mean? Anybody knows? इसका क्या मतलब है? बाई की ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये मार्केट ऊपर जाएगा, ये तो वेरी सिंपल, बट करेंसी पेयर्स के थ्रू मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? It is very simple and it is very important. अगर आप किसी मार्केट में आप कॉल ले रहे हो या बाय ले रहे हो या सेल कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपका मतलब क्या है, राइट? तो if you are trading in GBP USD, British Pound USD, and you are taking the call trade right here, so it means you are saying the price of GBP, the price of
British pound will rise in compared to US dollar. Very simple. If you are taking a buy trade, you are saying the price of GBP will go up as compared to US dollar. Alright. And similarly, if you are taking a short trade right here, you are saying the price of GBP will go down as compared to US dollar. Alright. If I'm repeating again myself, if you are taking a short trade of GBP in GBP USD, you are saying the price of GBP will go down in compared to US dollar. This is very important. Okay. So guys, there are many factors that affects the foreign exchange market. Alright. So first of all, it is inflation. Inflation. What is the inflation rate in the country that affects? This affects the foreign exchange market. The interest rate, the public debt, how much debt the country has, alright, the political stabilities, political news, economical performances, the terms of trade, and the current account defect. And the current account deflect. So there are many other factors apart from all these that affect the foreign exchange market on a different levels. So suppose if there is any news in the market about particular country and there is a negative news, so there are very good chances that the currency of that country will go down as compared to other currencies. Alright, so you can see all these things or in Google. If you type the strength meter, just type strength meter in Google, okay, and you can see the strength meters of all the different currency pairs. So through that you can trade, okay, through that you can see what is the strength of the currency pair today right now. All right, so moving on. So guys, in the end of this video, there's a pro tip in which I'll tell you how can you buy, how can you sell, how can you trade, how can you analyze the foreign exchange market when you are trading it. So please focus, this is a very important part. So first of all, how will you choose in which currency pair you want to trade, right? Because there are many currency pairs in which you can trade, but you have to choose some of them because you cannot trade in all of them, right? Because there are many. So for that, what we will do, we'll open a new tab, we'll go to Google and we'll type CURRENCY strength meter. So what is it today? Today is Saturday, so the market is, as you can see, the market is off today. So you will not be able to see the strength of the currency meter, but I can give you the example. Okay, we can take an example. Okay, so what I did, I wrote here currency strength meter. Okay, and click enter, and then you can see the first link over here. Just click on this and you will be in this window, right? I'll don't worry about the link and all, I'll leave in the description section. Okay, so guys, what is this? As you can see, Euro, GBP, USD, AUD, JPY, CHF, and others. Alright, so what is this? So this is showing the strength of Euro currency in the market. This is showing the strength of GBP. This is showing the strength of US dollar. So what you can do, so suppose you want to take a buy trade, okay, as you can see, the US dollar strength is very high as compared to GBP, right? This US dollar is very strong as compared to GBP. Alright, so first of all, we'll look in USD, GBP, GBP, USD. Alright, GBP, USD, we are in the chart of GBP, USD. Right now the market is off. Again, I'm saying this to you, I'm just giving you an example. How can you take trades? So आपने यहाँ पे देखा USD, GBP, USD बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, GBP बहुत कम स्ट्रेंथ है. तो होता क्या है, अगर GBP USD है, GBP की स्ट्रेंथ कम है, US डॉलर की ज़्यादा है, तो इसको आप एक तराजू पे रखिए, ठीक है? कैसे? अब मान लीजिए ये 1 kg का वेट है, ये 1 kg का वेट है, ये भी 1 kg का, ये भी 1 kg का, ये भी 1 kg का. कितने kg हो गए? 1 2 3 4 5 kg हो गए. ये कितना kg है? 1 kg. अगर मैं इसको तराजू पे रखूंगा, मैंने 5 kg दे रखा, 1 kg दे रखा, तो क्या होगा? ये ऐसे करके मूव करेगा, राइट? US डॉलर नीचे दबाएगा, GBP ऊपर जाएगा, बिकॉज ये हल्का है. तो ये क्या बना यहाँ पर? This is a down trend. Alright. So what does this mean?
the market will go down. Alright, this is very simple. Okay, बहुत ही सिंपली तरीके से हिंदी भाषा में आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से मैं एनालाइज करता हूँ. दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो गाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल डू योर ओन रिसर्च. This is how I trade in foreign exchange market. All right. So US dollar is 5 kg, GBP is 1 kg. The market will go down. All right. अब US GBP को पहले क्यों रखा मैंने, US डॉलर को बाद में क्यों रखा? तो उसका सिंपल सा मीनिंग ये है क्योंकि यहाँ पर GBP USD लिखा है, USD GBP नहीं लिखा है, तो GBP पहले आएगा, USD बाद में आएगा. All right. सिमिलरली अगर देखते हैं USD यूरो USD का चार्ट देखते हैं, यूरो की स्ट्रेंथ भी कम है, यहाँ पे 2 kg है, यहाँ पे 5 1 2 3 4 5 kg. तो क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं यूरो USD. तो पहले क्या है, यूरो, उसके बाद USD. अब यूरो कितने kg का है, 2 kg का, राइट. USDT कितने kg का है, 5 kg का. ये नीचे चला जाएगा, दैट मीन्स द मार्केट विल गो डाउन. व्हाट डज दैट मीन? The price of euro will go down as compared to US dollar. Very simple, because we are taking a sell trade over here. Okay. And similarly, अगर US dollar होता मान लीजिए 2 kg और यूरो USD होता आपका 2 kg और यूरो होता आपका 5 kg, तो क्या होता? तो यहाँ पर वेट ज्यादा होता, मार्केट ऊपर जाता, बिकॉज ये मार्केट का ट्रेंड बन रहा है. Alright. So what does that mean? The price of euro will go up as compared to US dollar. Very simple. All right. यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं. अगर नहीं है तो पीछे जाकर वीडियो दोबारा देख लो, बिकॉज बहुत सिंपल है. अगर एक बार समझ आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करना. तो कमिंग बैक टू द चार्ट नाउ गाइस, आपने देख लिया कि मुझे ट्रेड करनी है यूएस डॉलर, सॉरी हम कहाँ कर रहे थे, यूएस डॉलर और जीबीपी, राइट. जीबीपी यूएसडी में, सॉरी GBP USD में ट्रेड कर रहे थे. हमने क्या बोला था, यूएस डॉलर का प्राइस ज्यादा है, GBP कम है, प्राइस नीचे जाएगा. तो अब हम क्या किसकी ट्रेड लेंगे, सेल की ट्रेड लेंगे. तो डेली चार्ट खुला हुआ है, आई एम सॉरी, आप डेली चार्ट तो नहीं करोगे ना. तो डेली चार्ट खुला हुआ है, अभी हमें ओनली इसमें सेल की ट्रेड लेनी है. तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, हम सिर्फ इसमें दो चीजों का प्रयोग करेंगे. फर्स्ट इज RSI, second is Fibonacci. All right. First is RSI and second is Fibonacci. अगर आपको Fibonacci नहीं पता तो यहाँ कहीं लिंक आ रहा होगा. ओके, इस वीडियो के बाद वो देख लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है. Fibonacci is a very good tool और आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा. तो ये त्रिशूल दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे त्रिशूल, इस पे क्लिक करेंगे हम, Fibonacci ट्रेसमेंट पे जाएंगे. अब हम देखेंगे, तो पहली बार हमने क्या करा, हमने करेंसी स्ट्रेंथ मीटर में गए, स्ट्रेंथ चेक करी करेंसी की, किसमें सबसे ज्यादा है और किसकी सबसे कम है, वो वाला पेयर ओपन करा. उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया. अब हमें इसमें किस चीज की ट्रेड लेनी है, सेल की, ओनली सेल की ट्रेड लेनी है, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यूएस डॉलर हाई है, जीबीपी कम है. सेल की ट्रेड लेंगे तो विन होगा, अगर बाई की ट्रेड होगी लॉस हो जाएगा. ओके, सो अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या है, अब हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे. ठीक है, और ये जो मैं जितनी भी चीजें बोलूंगा, रिट्रेसमेंट एंड ट्रेड कहाँ लेनी है, कैसे लेनी है, टीपी कैसे लगाना है, एसएल कैसे लगाना है, ये आपको तभी समझ आएगा जब आप फिबोनाची की वीडियो देखेंगे. ऑलराइट, क्योंकि मैं ये पूरा चीज दोबारा नहीं एक्सप्लेन कर सकता, काफी लंबा हो जाएगा वीडियो. ठीक है, तो अब सपोज ये मार्केट यहाँ आया है, ठीक है, अब ये सीधे नीचे तो जाएगा नहीं, ये हो सकता है रिट्रेस करेगा, हो सकता है यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा, हो सकता है यहाँ से जाए फिर यहाँ जाए, राइट. तो हम किसका वेट करेंगे, हम वेट करेंगे ये दो लेवल्स का. ये आपको जो दो लेवल्स दिख रहे हैं 0.15 और 0.6, हम इन दो लेवल्स का वेट करेंगे. 0.15 आप हाँ इसमें भी ले सकते हो, 0.32 भी, दिस इज आल्सो वेरी गुड लेवल, बट 0.6 एंड 0.15 इज वेरी गुड लेवल, दीज आर द गोल्डन लेवल्स. तो अब क्या करेंगे, हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, मार्केट का इस रेंज में आने का हम वेट करेंगे. किस रेंज में, इस रेंज में आने का हम वेट करेंगे. जब मार्केट इस रेंज में आ जाएगी और यहाँ से रिवर्सल होके नीचे जाएगा, तो अब हम यहाँ पर हम शॉर्ट की ट्रेड लेंगे.
इसका SL कैसे लगाएंगे, इसका TP कैसे लगाएंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, SL TP के बारे में बात कर लेते हैं। SL और TP कैसे लगाएंगे, अरे यार जरूरत पड़ेगी भी फिबोनाची की। तो मान लीजिए अभी 0.5 पे आने के बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया, ये मार्केट ऊपर आया और यहाँ से रिवर्सल लिया नीचे। ठीक है, अभी नीचे नहीं गया, मान लीजिए यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब हम SL कहाँ लगाएंगे, SL हमारा होगा राइट, अरे होता है, अच्छा अच्छा, अरे माय मिस्टेक, ये यूज नहीं करता हूँ ज़्यादा। तो SL लगाएंगे हम राइट अबव दिस, यू नो 0.15 retracement level, और you can put it right here 0.16 के ऊपर लगा सकते हो, बट मैं लगाता हूँ, मैं हाफ लेवल पे लगाता हूँ। ठीक है, 0.15 के बाद रेजिस्टेंस आया तो मैं 0.15 के ऊपर हाफ लेवल तक इसका SL लगाऊंगा। और TP क्या होगा, TP तो आप कितना भी लगा सकते हो, बट मेक श्योर ज़्यादा मतलब एक्सटेंड मत करो। ठीक है, ज़्यादा लंबी ट्रेड नहीं चलानी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। पार्शली प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट ले सकते हो आप, यहाँ प्रॉफिट ले सकते हो। तो आप देख रहे हो कितना रेशियो हो गया आपका, आराम से 1:7 का रेशियो है, बहुत अच्छी ट्रेड है। और फॉर श्योर लाइक 95% ये ट्रेड आपकी पॉजिटिव में ही जाएगी। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज़ है जो मैं बताना भूल गया और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए RSI क्या है, RSI एक इंडिकेटर है, RSI is just an indicator which shows the strength of the currencies, right? तो which shows the strength in the market, okay? तो RSI का कैसे यूज करेंगे, RSI का हम ऐसे यूज करेंगे जब मार्केट हमारे 0.15 के लेवल पे होगा और मुझे दिखेगा कि ये ओवरसोल्ड हो रखा है, लाइक ऐसा होगा, ओवरसोल्ड हो रखा है मार्केट, तब मेरे लिए एक और अच्छा पॉइंटर होगा। तो द मार्केट इज क्लियरली टेलिंग मी द strength of this currency is losing. The sellers are dying and the buyers are dying and the sellers are again coming into the market because the overall trend is down trend, right? So that will be a very good pointer for me. So there are three things. First of all, currency strength meter. Always check currency strength meter to choose your currency pairs. बिलीव मी बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा इसके, मैंने देखा है, मैंने खुद करा था और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, सेकेंडली यूज फिबोनाची एंड फॉर फिबोनाची वॉच द वीडियो, एंड थर्डली यूज RSI। ओके, वेरी सिंपल टूल RSI, यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, RSI का बहुत सिंपल होता है, किस तरीके से यूज करते हैं आपको समझ आ जाएगा। ओवरसोल्ड और ओवरबॉट होता है इसमें, कुछ नहीं होता। तो आई गेस दिस इज इट, मैंने आपको समझा दिया क्या होता है फोरेक्स, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। ज़्यादा न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मेजर न्यूज़ है किसी करेंसी के बारे में, तो अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो उस करेंसी में ट्रेड मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब किसी करेंसी के बारे में न्यूज आती है तो मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने लगती है। ठीक है, सो गाइस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, हाउ इट वर्क्स, what are the things that affect foreign exchange market, and like how can you trade, how can you set your TP, how can you set your SL and everything. So in the last, I just wanted to say, if you have any questions or queries about foreign exchange market, just let me know in the comment section. I'll be more than happy to answer your questions. And subscribe to my channel, like this video and share it with your friends or family or anyone that you want. All right, and that's all I guess. See you into the next video. Until then, take care. Bye bye. Sayonara. Bye bye.